distortion is possible if the T2G and EG level is unsymmetrically filled up. Then we can only expect the Ian-Taylor distortion. T2G and EG level is unsymmetrically filled up. As for example, the example given is D9, D7, low spin, D4, high spin, etc. The effect is observed very strongly if EG level is unsymmetrically filled up. So before we discuss that, in your exam, this type of question will come that this particular d orbital configuration will show Ian-Taylor distortion or not. If this is the question, how can you explain this? Before discussing this, I am writing the different octahedral complex with the octahedral geometry for D1, D2, D3 up to D10, and we have to identify that it is go for Ian-Taylor distortion or not. As for example, say first of all, writing the high spin and low spin complex for octahedral geometry in that case. You understand this one. Say I am writing here octahedral field. Okay. octahedral field में नीचे वाला क्या होगा बताओ? Anybody from the class? octahedral में नीचे वाला क्या होगा? EG वाला होगा. T2G होगा ना नीचे वाला. तो I am writing here the portion. This is called the T2G. This is the T2G. ऊपर में क्या होगा? octahedral में ऊपर में क्या होगा? EG. Okay. Now I discuss about high spin and low spin complex individually, which will show the Ian-Taylor distortion. So before discussing this, I am just make a table here. Say high spin, first of all, and low spin complex. For example, high spin में, if I consider for D1 system, I am considering for D1. D1 का meaning है क्या है? D orbital में how many electrons are present? Just only one electron are present. So if the d orbital contain just only one electron, तो d orbital का electron पहले कहाँ आएगा? If you consider the octahedral complex, तो d orbital का first electron जाएगा T2G में, T2G के first इस level में एक आएगा. Is it clear? Any doubt, anyone? Is it clear? Any doubt, anyone? One second, please. D1, if I consider D1 electron, any system have just D1 electron, just D में एक ही electron है, तो octahedral field में D में जो 1 electron है वो कहाँ आएगा? सबसे जो stable है उसमें आएगा, T2G में आएगा. This is true? Yes, ma'am. This is true. Now the question is D2. If you consider for D2 में क्या होगा? Just think. क्योंकि D1, D2 में कोई हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होगा. There is a no question of D1, D2 में क्या होगा? D2 में और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा. ठीक है. D3 में क्या होगा? T2G में ही जाएगा. Exactly. T2G में जाएगा. Clear? तो D1, D2, D3 you get that D1 में D1, D2, D3 में क्या है? 3 में T2G में 3 जब D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप है. Is it clear? Yes, ma'am. So just think, Ian-Taylor distortion is possible when the orbital is filled up unsymmetrically. When the orbital is filled up unsymmetrically. That means if you consider from that section, you understand that this D3 configuration में
T2G में how many electrons are there? 1, 1, 1. That means each level containing 1, 1, 1 electron. Each level containing 1, 1, 1 electron. So it is symmetrically filled up. Is it clear? Yes, So ma'am. it is symmetrically filled up. As it is symmetrically filled up, so we can consider that as it is symmetrically filled up, so definitely we can consider that we can consider if it is symmetrically filled up, so definitely we can consider that this will show no Ian-Taylor distortion for D3. D3 will show no Ian-Taylor distortion. Now, if you consider for D2, what happens? Or D1. D1 में क्या होगा? If you go through it, D1 में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है T2G में. So these two energy levels are vacant. That means तीन जो लेवल है D1 में, तीनों लेवल के अंदर एक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. So this is unsymmetrically filled up D1 system. Is it clear? Yes, ma'am. So it will go for the Ian-Taylor distortion. It will go for the Ian-Taylor distortion. Any doubt, anyone regarding this? Any doubt? No, ma'am. Now, if you consider D2. Excuse me, ma'am. Yes. In case of D1, what will happen, ma'am? D1, yes, ma'am. D1 में क्या हो रहा है? D1 में कितना इलेक्ट्रॉन है? T2G में एक ही इलेक्ट्रॉन है D1 में. Yes, ma'am. तो yes, ma'am. अगर तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही लेवल में आएगा तो दो लेवल क्या रहेगा? दिस इज वैकेंट. तो सोचो एक लेवल में एक इलेक्ट्रॉन है, दो लेवल इज वैकेंट, सो इट इज अनसिमेट्रिकली फिल्ड. Unsymmetrical, yes, ma'am. हाँ, exactly. So there will go for no Ian-Taylor. I'm just using the cut marks to show you that we can get the Ian-Taylor distortion is possible here. That means it is unsymmetrically filled up. When unsymmetrically filled up, it will show the Ian-Taylor distortion. This is for D1. Now I am writing for D2. D2 के लिए क्या होगा? देखो. Symmetrical होगा और ये it does not show Ian-Taylor distortion. It gives Ian-Taylor distortion or not? Yes. Yes, very good answer. D2 में क्या हो रहा है? This is the D2. तो Symmetrical है दोनों. हाँ, exactly. So एक लेवल में one electron, then this level में one electron, two electron. One level is vacant. So it is symmetrically filled up or unsymmetrically filled up? D2? Unsymmetrical. Symmetrical. D2 symmetrical filled up. कैसे filled up? D2 में Both are unsymmetrical. Unsymmetrical, ma'am. exactly. Why unsymmetrical? Why unsymmetrical? Why Because unsymmetrical? Two level are Upper energy level is vacant. One is vacant. Exactly. जो 3 level है, जो 3 level है, in this 3 level, one level is vacant. So it is unsymmetrically filled up and it will go for the Ian-Taylor distortion. Is it clear? Is it clear? Any doubt, anyone? Now I am writing here D3 and what will be the situation for the D3 electronic configuration. बताओ क्या होगा D3 में? What happens in case of the D3? T2G में मैम 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. मैम. Okay, very good. Symmetrical So होगा, in ma'am. symmetrical. So each level contains just one electron. So it is symmetrically filled up. As it is symmetrically filled up, so it will not show any Ian-Taylor. Clear? Any doubt, anyone? Any question regarding this? No, ma'am. Now I come to the part about what happens in case of D4. When you consider D4 के time you have to consider it is high spin or it is low spin. You have to consider this.
D4 के टाइम, क्योंकि D4 के टाइम क्या होगा, आफ्टर fully filled up the T2G level, it will come this way or it will come T2G. This is the question. So first of all, I cleared this idea for you. Then I come to this section. Say, in that case, as for example, this is the D4. हाई स्पिन में क्या होता है, हाई स्पिन में पेयरिंग होता है? नो मैम, वीक लिगेंड. Exactly, very good answer. So D4 high spin I am writing here. High H and S high spin. D4 high spin के टाइम T2G लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 3 इलेक्ट्रॉन. 1 3 इलेक्ट्रॉन आएगा. EG में क्या होगा? हाई स्पिन, दैट मीन्स कोई पेयरिंग नहीं है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Is it clear? Now, please tell me, it will show Ian-Taylor distortion or not? देखो, T2G लेवल कल जो पढ़ाया था, आपको बोला था, Ian-Taylor distortion is. Yes, ma'am. So, very good answer. Yes, it will show that. And please explain why. Why? मैम आपने कल बताया था मेनली ईजी को देख के सिमेट्रिकल, इसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बताते हैं. तो very good answer, very good answer. So D4, please remember, D4 high spin will show the very strong Ian-Taylor distortion. Why very strong? Just think, this level is T2G level. This level is T2G level and upper का जो level है, this level is called the EG level. T2G level में how many electrons are present? In 3. T2G, 3. So please tell me, it is symmetrical or unsymmetrical? सिमेट्रिकल. Symmetrical. Very good. And EG में क्या हो रहा है? EG में जो present है, ये unsymmetrical हो रहा है मैम. अनसिमेट्रिकल. क्योंकि दो में 1 होना चाहिए सिमेट्री के लिए, और दो में each level must contain 2 electron for getting the symmetry. But here this level has 1 electron, this upper level has no electron. So it is unsymmetrical. But you know this thing that D4 high spin में, D4 में क्या है? EG level is unsymmetric. As EG level is unsymmetric, and you know this thing that yesterday that this type of we observed that EG level जब होता है तब क्या होता है? Separation is very high, and we can get the very strong Ian-Taylor distortion for D4 high spin. Please remember this. We can get very strong Ian-Taylor distortion for D4 high spin. Now I am writing for D4. What happens for D4 low spin? D4 low spin के टाइम क्या होगा? पेयरिंग होगा मैम पहले. Very good. पहले पेयरिंग होगा. तो we can write down this way. 1 electron, 2 electron, each filled up होगा एक एक करके. इसके बाद extra electron है. I am considered the D4 is here. We consider that D4 is low spin. Low spin means extra electron क्या होगा? जो extra electron है, it will, that means low, it will not cross this barrier. It will come into pairing, and if it come into pairing, that means, please tell me, it will show the Ian-Taylor distortion or not? Anybody from the class? It will show the Ian-Taylor distortion or not? D4 low spin. Yes, ma'am. It will show Ian-Taylor distortion. It will show Ian-Taylor distortion. Yes, ma'am. Why? No ma'am. It is unsymmetrically filled in T2G, ma'am. Exactly, but not exactly. T2G, it is definitely unsymmetrically filled up. क्योंकि क्या देख रहे हो? देखो, एक में 2 है, ठीक है, और 2 जो है लेवल, इसमें इंडिविजुअली 1 है. दिस इज नॉट फुल्ली सिमेट्रिक. इस तीनों में 2 करके होना चाहिए, but this is not strong interaction. This is not strong Ian-Taylor distortion. Is it clear? Yes, ma'am.
Is it clear? So Yes, ma'am. we can Ma'am, repeat one expect. time, ma'am. Ma'am, please. ओके आई विल रिपीट इट. देखो इसमें क्या हो रहा है, या जस्ट राइटिंग दिस एंटेलर डिस्टॉर्शन, आई एम राइटिंग दिस right sign, we give that antenna distortion is possible. Here antenna distortion, why it is very weak क्योंकि T2G में है. बट देखो क्या है, T2G में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज सिमेट्रिक. ठीक है, T2G में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक. बट इफ यू कंसीडर T2G जब D4 लो स्पिन है, D4 लो स्पिन में क्या हो रहा है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 में एक करके इलेक्ट्रॉन है. क्या होना चाहिए सिमेट्री के लिए? आइदर एक में तीनों में एक करके इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और तीनों में 2 करके इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. वही तो सिमेट्री का ए है. बट इधर क्या है, एक में 2 है और 2 में एक है. सो इट इज नॉट सिमेट्रिकली फिल्ड अप. But we consider T2G level only. So the antenna distortion is possible, but antenna distortion is very, very weak here. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Now, ma'am. And that okay. is in case of low spin, right? No, you don't memorize this thing. This is not at all required. You think low spin का meaning क्या है? Low spin means pairing. लो स्पिन मीन्स पेयरिंग. दैट मीन्स हाई स्पिन में क्या होगा, एक करके पहले ये वाला फील्ड अप होगा. इसके बाद हाई स्पिन में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर में जाएगा. हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब बताएंगे. लो स्पिन में क्या होगा, लो स्पिन में 1 जब फील्ड अप हो जाएगा, इसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस करके ऊपर में नहीं आएगा, वो नीचे ही पेयरिंग हो जाएगा उसका. सो दिस इज कॉल्ड द low spin. Is it clear? Okay, now we discuss about the D5 system and what happens for the D5 system. For D5 system, say as for example, T2G EG D5 हाई स्पिन. क्या होगा D5 हाई स्पिन में? मैम नहीं शो होगा. नहीं शो होगा. वेरी गुड आंसर. Symmetric. Full Yes, ma'am. high D5 high spin. That means individually one electrons are there. T2G में filled up, EG में 1 है. तो हाई स्पिन मीन्स क्या है, D5 हाई स्पिन, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन. तो T2G क्या सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक है, बताओ? सिमेट्रिक. सिमेट्रिक. सो नो एंटेलर डिस्टॉर्शन फॉर T2G. EG में क्या है, वो भी Each सिमेट्रिक. वो भी सिमेट्रिक है. सो D5 हाई स्पिन विल शो नो एंटेलर इफेक्ट. इज इट क्लियर? Clear? Now I come to the point for D5 low spin, what happens? Say this is the situation for D5 low spin. Don't memorize, okay? Not required. Very easy CFT actually. It show antenna distortion. शो करेगा मगर वीक. Very good. Who give the answer? What's your name? मैम सक्षम. Section. Very good answer. So D5 low spin में क्या होगा, 1 2 3. Low spin that means pairing. जो 3 है और एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएगा, क्या होगा, पेयरिंग होगा. अगर पेयरिंग होगा तो दिस इज क्या है, बताओ? दिस इज सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक? अनसिमेट्रिक. क्यों अनसिमेट्रिक है? बिकॉज ऊपर वाला जो है ना लेवल, वो खाली है, उसमें 2 पेयरिंग में नहीं है. Incomplete T2G level.
एग्जैक्टली दैट मीन्स वी कैन कंसिडर दैट दो T2G लेवल में दो करके इलेक्ट्रॉन है, बट वन लेवल इज जस्ट कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन. इसमें और एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टू गेन द सिमेट्री. सो इट विल शो द Ian-Taylor distortion, but Ian-Taylor distortion Yes, ma'am. will be weak. Clear? But Ian-Taylor distortion will be weak. Is it clear? Yes, ma'am. Now, okay, now I come to the part for what happens in case of the D6 system. Okay, what happens in case of the D6 system? बताओ क्या होगा D6 system में? ये भी अनसिमेट्रिक होगा मैम, और इट्स सो ईएन टेलर डिस्टॉर्शन. मैम हाई स्पिन में करेगा और मैम वीक होगा वो भी. ठीक है, तो एक बार देखते हैं. चलो, we can go for up to D10 and then we want to calculate the energy option also. D6 देखो, दिस इज द मैम लो D6. स्पिन में नहीं होगा, हाई स्पिन में होगा. हाँ, डेफिनेटली हाई स्पिन में होगा. तो D6 हाई स्पिन. हाँ, क्या होगा हाई स्पिन में? Into high spin, that means 1 electron filled up, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron, extra electron, come this portion. Now anybody from the class, please tell me EG level क्या symmetrically filled up है यहाँ पे? EG level? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. It Yes, is ma'am. symmetric. हाँ, तो EG level is symmetrically filled up because दूसरा कोई आंसर दो. Why EG level is symmetrically filled up? Anybody from the Because class, ma'am- others? बिकॉज ऊपर और दोनों नीचे लेवल में जो है एक-एक एक इलेक्ट्रॉन है. Yes, sir. दोनों Okay, levels में एक इलेक्ट्रॉन है. Okay, very good answer. T2G level क्यों Unsymmetric. symmetric, क्यों unsymmetric है? Why T2G level is unsymmetric? बिकॉज जो लेवल है ना उसमें जो पेयर इलेक्ट्रॉन. Okay, okay, off the microphone please. हाँ, so T2G level में क्या है? एक में दो है और दो में एक एक करके है. So this is not the symmetrically filled up. So it will show the Ian-Taylor distortion, but Ian-Taylor distortion is not the very strong distortion. It is a weak distortion. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, now, ma'am. now we come to the D6 low spin. What happens for D6 low spin? Huh? It will not show, ma'am. Not so. No, it will not show the Ian-Taylor distortion Very good answer. Why it will not show the Ian-Taylor distortion? because all the electron will pair All up the in the electrons are T2G symmetric. level and it will be symmetric. Exactly, क्योंकि T2G level में 6 electrons are filled up. In the T2G level, there are just 6 electrons are filled up for the D6 low spin complex. D6 low spin complex. That means we are considering here that this is symmetrically filled up T2G level. EG level में कोई नहीं है, T2G level में symmetrically filled up. As T2G level is symmetrically filled up, so we can consider that it will show no Ian-Taylor distortion. So we can write down in that way, it will show no Ian-Taylor distortion. Is it clear? Yes, ma'am. Now I come to the part for D7. What happens for D7? D7 के लिए क्या होगा? देखो मैं इधर ही लिख देता है D7 के लिए. So this is for example. D7 के लिए. It's How so many electrons are possible for D7? D7 में लिए ये इधर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा. वही तो ना D7 में? D7 high spin I am considering. Yes, ma'am. D7 high spin में क्या होगा? Weak. एक इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएगा. अनसिमेट्रिक होगा मैम. और No, ठीक weak है, distortion. Unsymmetric. मैं पहले एक बार फिर से लिखते हैं. It will be better for new. This is the observe. D10 तक.
say D7 high spin and D7 low spin. D7 system high spin. हाई स्पिन में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7. EG level is symmetrically filled up or not? EG level? Symmetrical. EG level is symmetrically filled up. T2G level is not symmetrically filled up. As T2G level is not symmetrically filled up, so definitely we can consider that please off the microphone. Ian-Taylor distortion is possible. So Ian-Taylor distortion is possible. And what happens for D7 low D7 low spin में क्या होगा बताओ? मैम स्ट्रॉन्ग Ian-Taylor distortion possible. Possible होगा क्या? D7 low spin में क्या होगा? मैम unsymmetrical EG level. दो एंड एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे आएगा D7 लो स्पिन में, ठीक है? नॉट पॉसिबल आई थिंक. पॉसिबल ना? बहुत स्ट्रॉन्ग एक आंसर दिया. पॉसिबल एक तो आंसर दे दिया आपको इधर, जो बहुत अच्छा आंसर दिया, बिकॉज D7 लो स्पिन में देखो क्या हो रहा है. D7 T2G लेवल में क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल present? 6 electrons. So it is symmetrically filled up. T2G level is symmetrical filled up. EG level में क्या हो रहा है? How many electrons are present? One electron. Unsymmetrical. But question is EG level is unsymmetrical, so it will show very strong Ian-Taylor distortion. Unsymmetrical electronic level fill up is will give you the Ian-Taylor distortion, but highest effect and very strong Ian-Taylor distortion is possible when the EG level is unsymmetrically filled up, not T2G. So here EG level is unsymmetrically filled up and it will show very strong Ian-Taylor distortion. So please write down, this is also very strong Ian-Taylor distortion. Clear? Any doubt, anyone? Any question regarding this? Anyone? Now I am writing for what happens in case of the D8. D8 में क्या होगा बताओ कोई? This is very interesting for D8. क्या होगा? मैम हाई स्पिन में नहीं शो करेगा. D8 is very interesting feature. That is why एक चीज याद है मैंने जब क्लास में बोला था, ये क्या था? NiO बॉन्ड निकेल 2+ में था, निकेल +2 सिस्टम NiO बॉन्ड. तो इसमें क्या था? ईच बॉन्ड विल गिव द सेम बॉन्ड लेंथ 2.05 एंगस्ट्रॉम. कोई भी Ian-Taylor distortion शो नहीं हुआ था Ni2+ सिस्टम में. Ni2+ क्या सिस्टम है? D8. It has D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni2+. क्यों नहीं हुआ था? इसका ऑल बॉन्ड लेंथ जो था वो सेम था. Same था. Now question is who will give you the answer why all bond lengths should be same? It will that means it will come from the term that it's electronic configuration. इधर क्या था? निकेल 2+ था, इधर कॉपर 2+ था. निकेल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है? D8. कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है? D9. So if I consider in that case you understand that D8 system. Because in both high spin and low spin complex, all the level will be completely filled up, symmetrically filled up. Exactly. This is the what's your name? Bidhan Roy. Okay. So D8 के लिए लिख रहा है, देखो इधर देखो D8 system. Okay. So first of all, if you consider D8 high spin, what happens? 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron, 6 electron, 7 electron, 8 electron.
Just think, T2G level symmetrically filled up or unsymmetrically filled up? Symmetrical. क्योंकि each level contain 2 2 2 6 electron. EG level में क्या हो रहा है? वो भी Symmetrical. symmetric है. Symmetrical. EG level each contains 1 1 electron, so it is fully symmetric. Yes, Okay. ma'am. D8 high, it is D8 high spin or low spin. This is D8 high spin. Okay. So for D8 high spin, we can get the same thing. There should be no Ian-Taylor distortion is possible. So I'm writing here no Ian-Taylor distortion. But what happens for D8 low spin? D8 low spin is interesting also. क्या होगा D8 low spin में? यहाँ पे 2 आएगा. Same. Same, exactly. That is why I'm asking you that D8 system will not show, and from this section you get one answer also. D8 system जो होता है will not show Ian-Taylor distortion, and D8 most of the cases D8 element gives you the square planar complexes. D8 give you the square planar complexes, not octahedral complex. Not octahedral complex. Why D8 go for the square planar complex? We will discuss later when you go deeply into the CFT. So that means we consider that AB symmetric hai. That is why when the experimental observation done, that means nickel 2 is central position, as D8 is fully symmetric. So Ian-Taylor distortion is not possible at all. Is it clear? Anyone have any doubt regarding this today? Any doubt, anyone? No, ma'am. So now we come to the part for the D9, and what happens for D9 and D10, because D9 is a very strong, it will show a very strong Ian-Taylor distortion. Okay, I'm writing here. D9 high spin. D9 high spin and low spins. Both of the cases, it is same or not, you have to consider this one. First of all, I am writing for D9 high spin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, this is D9 system. D9 system क्या है? Copper 2 is D9 system. Copper 2 is D9 system. It will show very strong Ian-Taylor distortion. Anyone can explain this from the class? Why it will show very strong Ian-Taylor distortion? Anybody from the class? Yes, ma'am. Because Ma'am, is it Ma'am, EG level is unsymmetrical. That is why. Exactly. EG level is unsymmetrical. That is why we can get the this observation. That means we can get these two. Actually, we observe that these 4 bond length are same. With what is the motto of the Ian-Taylor distortion, and these 2 levels are different. It will show higher bond length 2.45, and this will show 2.00, 2.00. But in case of the nickel, we will observe that all the bond lengths are same. 2.05 angstrom, all the level. But there is a question. Few compounds show Ian-Taylor distortion Z out. Few components will show Ian-Taylor distortion Z in. Why this is Z out and Z in, we will discuss it next class if we get this, come to this part. Next, another part, say D9 low spin. D9 low spin में क्या होगा? D9 low spin में कोई change होगा क्या? D9 same होगा. So D9 low exactly. D9 low spin same thing. Just only 1 electron left to fulfill the to gain the D10 electronic configuration filled up. Now another is D10. For go through the D10 electronic configuration, and D10 you know this thing that D10 electronic configuration will show the
zero CFSE most of the cases. D10 electronic configuration will go for the zero CFSE. Why zero CFSE? We will calculate it. So D10 में क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 all are filled up. So I am writing here in that way. बताओ कोई भी Yantaylor distortion possible है क्या D10 में? नहीं है मैम। No, Not possible. ma'am. Because all are No. symmetric. That is why. So all are symmetrically filled up. That is why it is not possible to go for the D10 electronic configuration. So before, I think it is clear to you about the Yantaylor distortion. Ma'am, it's low spin, right? Which one is low spin? Please tell me. You D10, can't. D10. You have. Please give me the answer. You can't separate because D10 low spin में भी जो है, high spin में भी same ही है. You can't change it ना. Actually, D10 का low spin, high spin का कोई मतलब नहीं है. कोई मतलब है क्या? Same electronic configuration D10. D9 is also true. D8 also same thing. But we have to much more cautious about D4, D5, D7, D6 system. When you calculate the different types of pairing, different types of CFSE for the octahedral, because next class we come to the part how we can calculate the CFSE for the different energy level. I am just give you the one example for the calculation of the energy level for CFSE. See, I am writing here D1 electronic configuration. Next class we will come to this part. कोई भी सिस्टम है, ये सिस्टम का D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? You have to calculate the crystal field stabilization energy if it is present in the octahedral field. If it is present in the octahedral field, how will you calculate? Anybody from the class? Anybody? Please tell me what is the CFSE of this D1 electronic configuration? -0.2. -0.2. Why? Yeah, okay, good. उसमें मैम EG तो फिल ही नहीं होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैम फॉर्मूला होता है -0.2 इंटू T2G प्लस 0.6 इंटू EG. तो मैम EG में तो 0 इलेक्ट्रॉन है. Okay, your idea is correct, fully correct. What we have already discussed, but it is not -0.2, it is -0.4. -0.4. आपका याद है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड हम लोग जब कैलकुलेट किया था क्या था? T2G लेवल में देखो क्या लिख रहा है. T2G जो लेवल था इसमें क्या डिफरेंस था? Next class I will discuss this one. Okay, just 5 minutes left, so I am just give you the introduction part. This energy difference is -0.4 क्या है? डेल O. क्लियर? अपर लेवल क्या है? अपर लेवल का क्या था? प्लस दिस इज प्लस 0.6. सॉरी मैम, फॉर्मूला लर्निंग. तो ये हो ही सकता है. सॉरी का क्या दिया है? योर आंसर इज वेरी मैंने आंसर इज करेक्ट. तो डोंट रिक्वायर टू रिमेम्बर दिस टाइप ऑफ वैल्यू. इट इज बेटर, आपको याद हो जाएगा, ठीक है? -0.4 डेलो, ऊपर में क्या आएगा? प्लस 0.6 डेलो. तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है D1 में, D1 सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे कहाँ आएगा? T2G में आएगा. तो इसका CFSE कैसे निकालोगे? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इसका CFSE आएगा डेलो शुड बी क्या आएगा? -0.4 इंटू क्या होगा बताओ? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर? 1. So exactly -0.4 into 1 del O, and it should be -0.4 del O. If I consider D2 system में octahedral field में how many electrons are present? D2 field में anybody from the class? 2. So it should be 2. -0.4 into 2 del O. Clear? D3 system, how many electrons present? 3. 3. So it should be -0.4 into 3 del O.
If I consider D4 system, sorry, D4 high spin. D4 high spin में क्या होगा? Please give me the answer. D4 high spin में मैम 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन EG में। है, तो कैलकुलेट करो 3 इलेक्ट्रॉन T -0.6 डेलो क्या है? क्या है? 0.6 -0.6 डेल जी ओ। Exactly, very good answer. That means 3 जो इलेक्ट्रॉन है, आई एम कम टू दिस सेक्शन, T2G लेवल में देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 into -0.4 क्या आएगा? -1.2 डेलो। एंड EG में क्या इलेक्ट्रॉन है? जस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द EG। एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आता है? +0.6, so 0.6 into 1, that means the energy level will be क्या आएगा? CFSE should be -0.12 plus 0.6, that means -0.6 CFSE. It is the CFSE. So for if you go through the another example, D5 high spin में क्या आएगा बताओ मेरे को? What happens for D5 high spin? Anybody? Exactly. So it is, please remember, D5 high spin. नीचे कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 into 0.4, it is -1.2. ऊपर में क्या है? 2. So 2 into plus, exactly 1.2. 2 into 0.6, that means +1.2. It will be 0. Same thing, it will be achieved when we can consider D10 electronic configuration. It is also 0. But why it is important, D5 high spin and D10 D10 configuration is 0? Because in the two cases, most of the two cases, spinal के time different spinal structure and tetrahedral field में पाने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है. We will explain it later. But please remember that how we can calculate, because next class we will go for the calculation of the CFSE for octahedral and discuss the tetrahedral complex also. Okay, thank you. Anyone have any doubt? I have already shared the code to you for in your WhatsApp group and Google Form. I'm just shared this link of the Google Form also. Anyone have any doubt? Anybody? Any question? Ma'am, can we say that Z out distortion means which show high Ian-Taylor distortion? Very good question. Not always, because Z in is possible, but most of the cases high Ian-Taylor distortion gives that Z out. Very good. Most of the cases high Ian-Taylor distortion is given by Z out. Acha, I am sharing the exam code, okay? Google Form. Please go through this. Excuse me, ma'am. हाँ बताओ. In case of high spin, the EG level is unsymmetrical, right, ma'am? And in case of low spin, in case of high spin EG level is unsymmetrical का क्या मतलब है? मैंने और एक बार बताओ ठीक से. मैंने you just give me the idea. T2 देखो, high spin, I am just considering that this way. High spin का मतलब क्या है? High spin, just follow the diagram, okay? Say I am writing D4, okay? okay, ma'am. Just D4 के लिए आपको आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा D5 करने के लिए. D4, this is the system, okay? High spin, low spin, don't think about what is high spin, what is low spin, don't think. आप ये मान के चलो हाई स्पिन में क्या होगा, ईच लेवल में जनरली 1 1 1 करके इलेक्ट्रॉन रहता है, वही तो. एंड ईजी लेवल में क्या होता है, सॉरी लो स्पिन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इज इट क्लियर? तो देखो D4 जब हाई स्पिन होगा, D4 हाई स्पिन में क्या होगा, पहले मैंने बोला एक एक करके इलेक्ट्रॉन आएगा. तो दिस इज T2G लेवल में इंडिविजुअली 1 इलेक्ट्रॉन आ गया. I am considering D4 is high spin, तो EG लेवल में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा. बट इफ यू कंसिडर दिस इज द लो स्पिन में क्या हो रहा है, पेयरिंग होगा. दैट मीन्स देखो इंडिविजुअली एक एक करके तो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा. जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर हाई स्पिन होगा, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आएगा ऊपर में,
अगर लो स्पिन होगा इट शुड बी पेयर. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Okay. If you have any Yes, ma'am. doubt, you can ask me the question, and next class we can repeat this also. There is no problem. Okay. So thank you, Okay, ma'am. everybody. Okay, thank you. Please give the test also. Okay. And one thing I am telling you, please किसी को जब गूगल फॉर्म सबमिट करते हो ना, कोई नेम प्रॉपरली नॉट मेंशन, जैसे HHS ऐसे टाइप का दिखा रहा है, तो प्लीज रेक्टिफाई दिस वन एंड बेटर इफ यू मेंशन योर नेम. ओके, इट विल बी बेटर. ओके Ma'am, one last question. One last बताओ question. yeah, बताओ. अच्छा, when the Ian Taylor distortion means